मुझे बड़ी अच्छी तरह याद थी वर्ड फॉर वर्ड उनको याद थी कि वो किस तरह से इन्वेंट की थी उस बंदे ने सिलाई मशीन, बिकॉज आई रेड इट, और वो बचपन से एक वो बैठा हुआ था उसमें, So तो I she was like, didn't मैं know anyone. किसी और बंदे हाँ. को नहीं जानती। तो एक तो A actually read, realized, and B remembers all the stuff from it. And the page numbers also. And So the that page was odd because a lot of people think कि ये वो, and I think it's very for me conversation is very important. I conversation is part of my like I love having conversations with random strangers, knowing their stories. तो अगर कोई आगे बंदा बड़ा boring हो, I don't suffer any fools, तो मुझे बड़ा odd भी लगा because हुआ ये कि इनकी display picture पे इनकी बहुत एक मॉडल्स वाली पिक्चर लगी हुई थी. सो वी स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर बिकॉज आई वाज रिसर्चिंग लोकेशंस फॉर माय अपकमिंग फिल्म एंड किसी ने सजेस्ट किया हुआ था और ये व्लॉग्स वगैरह. तो अब आई एम मेकिंग अ पंजाबी फिल्म, यू सी. सो उस पंजाबी फिल्म के लिए आई नीडेड लोकेशंस इन वैंकूवर एंड LA एंड माय राइटर इज इन LA. So, and I needed a production team in the US. So somebody, sort of, I can't remember how we sort of came across. लेकिन जब मैंने display picture देखी तो I was expecting a very young, कि मैंने 24 साल नौजवान है और ये वाली hair style की 4 इंच वाली hair style होगी. So when I spoke to him on the phone, I thought बड़ी mature आवाज़ है ये तो. It's like, and then he was talking a lot of sense, and so the conversation shifted from anything superficial and shallow in film to a very deep psychological conversation about dream interpretation and theta waves. So brain के वो theta gamma waves में चला जाता है when you're falling asleep or when you sleep. तो उस बारे में कोई complicated सी बात हो रही थी. और I mean moral of the story जो आपकी ये पॉडकास्ट सुन भी रहे हो कि audience has fallen asleep because of this story. बहुत सारी ऐसी चीजें जो कर रहे होते हैं ना जो अच्छा मैं बड़ा बचपन से इतनी रील्स पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, ऑल ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन इन माय हेड. तो आप कभी कभी सोचते हैं कि यार ये काम तो आ नहीं रही, ये मतलब मुझे पता था काम आ गया. तो वो तो आपको इंस्पायर किया ये कि I was very impressed and I thought I can have a conversation with him. And for me, I think it's very important क्योंकि the things that you grow up with and people think कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, none of those things are important because if you cannot have a conversation with someone and the fact कि he's a loner, he's the sort of person कि जो हर काम अकेला करना, not really used to a lot of people around him. He's pretty antisocial, I suppose, and I'm also the sort antisocial in the sense कि you don't like socializing much, you're not a socializing butterfly, right? अच्छा ऐसा है नहीं, मुझे लग नहीं नहीं वो असल में आजकल ना ये इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होता था, वो जरा मिक्सचर भी आ गए हैं, Antisocial इंट्रोवर्टेड एक्सट्रोवर्ट. तो वो आई थिंक आई एम वन ऑफ दोस. And I'm also one of those exactly. कि मतलब मेरी public life एक है, but then because I'm almost like an only child because I'm the youngest in the family, तो मैंने हर काम जिंदगी में अकेला किया और फिर जिंदगी की जर्नी भी अकेली रही. तो whenever people used to say that, I used to think कि 24 घंटे किसी को बर्दाश्त करना is a little bit difficult. So the fact that I found someone that I could talk to for hours, and I mean we've been together for quite a long time and he's not getting on my nerves and I think I'm perhaps not getting on his nerves. I think it's the conversation because we जो है आप शुक्र करेंगे व्हाट्सएप आ गया है. हम अगर 10 साल पहले मिले होते तो मोबाइल के पैकेज ऐड